हे गाइस, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग फार्मूला। अगर आप ऑफिस में स्मार्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वोकेबलरी आपका गेम बदल देगी। चलिए तो शुरू करते हैं एपिसोड 2। अपनी नोटबुक निकाल लो और आज की वोकेबलरी आपके करियर की कम्युनिकेशन बदल सकती है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है मेक एन एक्शन इजियर, यानी कि सुगम बनाना किसी कार्य को। For example, technology can facilitate faster communication. Synopsis. Synopsis का मतलब होता है short summary, यानी कि सारांश. Please submit a synopsis of the final report. Turnaround time. TAT. Turnaround time का मतलब होता है time taken to complete a task. पूरा होने का समय. The turnaround time for tickets must be reduced. Bottleneck. Bottleneck means point where progress slows. अवरोध, अड़चन, इसको क्या कहेंगे? bottleneck. Approval delays are becoming a major bottleneck. Approval delays are becoming a major bottleneck. Outreach. Outreach means extending support or communication. पहुंच या संपर्क विस्तार. The outreach team will handle customer queries. Scalable solution. Scalable solution means system capable of expansion. विस्तार योग्य समाधान. We need a scalable solution for future growth. We need a scalable solution for future growth. Due diligence means careful review before decision. उचित सावधानी. The acquisition team is performing due diligence. Digital transformation. Integrating digital technology means digital parivartan. Digital transformation has improved workflow. Digital transformation has improved workflow. Framework means structured system, ढांचा. This framework will guide our training modules. This framework will guide our training modules. Viability means practical ability to work. Vyavharita. We need to assess the viability of this proposal. Next word is pipeline. Pipeline means upcoming work or projects. भविष्य की परियोजनाएं. There are 3 major D's in the pipeline. Synchronize. Synchronize means work in harmony. समन्वय करना. Let's synchronize our calendars. Let's synchronize our calendars. Accountability. Accountability means responsibility to answer for actions. जवाबदेही. जवाबदेही को कहते हैं accountability. जैसे managers must ensure accountability in tasks. मैनेजर्स को कार्य में जिम्मेदारी लेनी चाहिए. Conflicting priorities means competing tasks requiring attention, यानी कि टकराते हुए प्राथमिकताएं. We need a plan to manage conflicting priorities. Workforce planning means strategy to manage employees, यानी कि कार्य बल योजना. जब एम्प्लॉयज को संभालने का जो प्लानिंग है उसको क्या कहते हैं? वर्कफोर्स प्लानिंग. वर्कफोर्स प्लानिंग इज क्रूशियल आफ्टर एक्सपेंशन. एट्रिशन. एट्रिशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज लिविंग ओवर टाइम. ओवर टाइम, ओवर अ टाइम पीरियड एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? कर्मचारी का क्षरण, यानी कि एट्रिशन. हाई एट्रिशन अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी. ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है लॉस ऑफ टैलेंटेड एम्प्लॉयज, यानी कि प्रतिभाओं का पलायन. द आईटी सेक्टर इज फेसिंग ब्रेन ड्रेन. ऑपरेशनल एफिशिएंसी. कंप्लीटिंग वर्क विद मिनिमल वेस्ट. संचालन दक्षता. कंप्लीटिंग वर्क विथ मिनिमल वेस्ट. संचालन दक्षता.
Automation increases operational efficiency. वेंडर मैनेजमेंट मीन्स हैंडलिंग एक्सटर्नल सप्लायर्स. विक्रेता प्रबंधन को क्या कहते हैं? वेंडर मैनेजमेंट. वेंडर मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय द प्रोक्योरमेंट टीम. टास्क प्रायोरिटाइजेशन. टास्क प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है रैंकिंग वर्क बाय इंपॉर्टेंस. जो कार्य जितना इंपॉर्टेंट हो उस हिसाब से उसकी रैंकिंग करना. कार्य प्राथमिकता. टास्क प्रायोरिटाइजेशन. Task prioritization improves work execution. Next word is SWOT analysis. SWOT analysis का मतलब होता है strengths, weaknesses, opportunities, threat review. S for strength, W for weaknesses, O for opportunities, and T for threats. Analysis means review. So SWOT विश्लेषण को कहते हैं SWOT analysis. We will start planning with a SWOT analysis. Grievance means complaint or dissatisfaction. शिकायत. Employees can submit a grievance to HR. Scoring matrix. Scoring matrix का मतलब होता है table for rating और evaluation. मूल्यांकन तालिका को कहते हैं स्कोरिंग मैट्रिक्स. यूज अ स्कोरिंग मैट्रिक्स टू कंपेयर प्रपोजल्स. आउटसोर्स मीन्स हायर एक्सटर्नल सर्विसेज. बाहरी स्रोत से कार्य करवाना. वी मे आउटसोर्स कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. रिस्ट्रक्चर मीन्स चेंज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. means पुनर्गठन. The company plans to restructure departments. Job rotation. Job rotation means moving employees across roles. कार्य परिवर्तन. Job rotation helps improve skill sets. Appraisal. Appraisal means performance evaluation. मूल्यांकन. Your appraisal meeting is scheduled next week. Ideation. Ideation means generating new ideas. विचार निर्माण. We will begin with an ideation workshop. Incentive. Incentive का मतलब होता है benefit to motivate employees. Incentive means benefit to motivate employees. प्रोत्साहन. Sales staff received incentives for performance. Business model. Business model means structure of how a company earns. व्यवसाय model. We redesigned our business model post pandemic. Analytics means data interpretation or विश्लेषण. Analytics help improve decision making. Resilience means ability to recover from setbacks. लचीलापन. Organizational resilience is essential during crisis. Hybrid workforce means combination of office plus remote staff. मिश्रित कार्यबल उसको क्या कहते हैं? Hybrid workforce. Okay. We now operate with a hybrid workforce model. Next is roll out. Roll out means, what is the meaning of roll out? Launch of a new feature or policy. कार्यान्वयन या शुरुआत उसको कहते हैं roll out. The new policy roll out happens next month. Credits and liability means financial obligation, ऋण और दायित्व. The finance team reviewed the credits and liability records. Business continuity plan BCB strategy to run operations during crisis. व्यवसाय निरंतरता योजना BCB व्यवसाय निरंतरता योजना. Business continuity plan जब क्राइसिस के टाइम पे जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी टू रन ऑपरेशंस, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. एवरी कंपनी मस्ट मेंटेन अ BCB. नेक्स्ट वर्ड इज कस्टमर रिटेंशन मीन्स कीपिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स. जो प्रोसेस है
कीपिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट का, उसको क्या कहते हैं? कस्टमर रिटेंशन, ग्राहक बनाए रखना। कस्टमर रिटेंशन इज चीपर देन एक्विजिशन। ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल मीन्स recorded evidence of actions taken, क्रियाकलाप record. The software maintains a complete audit trail. Endorsement letter means written approval document. अनुमोदन पत्र, we need an endorsement letter from leadership. जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी क्या होता है? रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि नौकरी विवरण। अपडेट द जेडी बिफोर हायरिंग। वर्क एनिवर्सरी मीन्स कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कार्य वर्षगांठ। वी सेलिब्रेट एम्प्लॉय वर्क एनिवर्सरीज मंथली। परफॉर्मेंस बोनस मीन्स एक्स्ट्रा रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क, प्रदर्शन बोनस। टॉप परफॉर्मर्स रिसीव, top performers received a performance bonus. Next word is कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स स्किल एनहेंसमेंट को कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि क्षमता निर्माण। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड इज रीएलोकेशन रिक्वेस्ट मीन्स आस्किंग टू शिफ्ट टीम्स और प्रोसेस, पुनः आवंटन अनुरोध। सबमिट अ रीएलोकेशन रिक्वेस्ट इफ नीडेड। टास्क डेलीगेशन फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ असाइनिंग टास्क, कार्य विवरण ढांचा। वी फॉलो अ टास्क डेलीगेशन फ्रेमवर्क फॉर प्रोजेक्ट्स। स्किल मैपिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग स्किल्स ऑफ वर्कफोर्स, कौशल मानचित्रण। स्किल मैपिंग हेल्प्स इन बेटर प्रोजेक्ट एलोकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब लक्षित श्रोता, intended recipients. Marketing campaigns require a defined target audience. Client engagement means relationship building with clients, ग्राहक जुड़ाव। Client engagement strategies improved feedback. Next word is compliance audit. Review to ensure policies are followed. अनुपालन निरीक्षण। The compliance audit will take place next quarter.